Good morning, students. Now, I'll continue with the terms of accounting, the fourth accounting term, drawings. As in the last term, we have discussed capital, the amount invested by the owner of the business. Drawing is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use from the business. मतलब अगर ओनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर बिजनेस में से पैसे या गुड्स निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैश विदड्रॉन फॉर मेकिंग पर्सनल पेमेंट, इसे हम ड्राइंग्स कहेंगे. पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, वो हमारी ड्राइंग्स हैं. मतलब जहाँ पे वर्ड पर्सनल यूज़ आ जाए ओनर का, दैट इज़ योर ड्राइंग्स. इससे क्या है, इससे हमारा कैपिटल घट जाएगा. अगर उसने 1 लाख रुपया डाला है, उसमें से 10,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो उसका कैपिटल कितना रह गया? 90,000 ओनली. मीन्स हिज कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड. नेक्स्ट, लाइबिलिटीज़. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज़? मैंने कितनी बार ये बात की है, एसेट शोन, लाइबिलिटी शोन, एसेट शोन्स, लाइबिलिटी शोन. बट होती क्या है ये लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स. अमाउंट ओड मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. जो पैसे बिजनेस ने बाहर वालों को पे करने हैं, जिसके लिए वो ओ करता है, दैट इज लाइबिलिटी. नाउ दीज आर of 4 types. These are classified firstly relation with the firm, secondly on the basis of time. Now with relation with the firm, liabilities are of 2 type: internal liability and external liability. Internal liability means liability of the business within the business, like capital. Capital is contributed by the owner is within the business, but still liability. Capital is a liability of the business because of which concept we have discussed earlier? Because of separate entity concept. Yes, because of that concept, capital is liability, but it is within the business. That's why it is internal liability. Second is external liability. External liability means liability outside the business. Like business ने किसी बाहर वाले को पैसे देने हैं. क्रेडिटर्स, जिससे बिजनेस ने उधार लिया है, दे आर क्रेडिटर्स. फ्रॉम whom business has purchased on credit or taken money on credit or anything on credit, they are creditors. So they are external, they are outside the business, that is external liability. So clear meaning of liability. Liability means उधार बिजनेस का, सिंपल हिंदी में, and in English means amount owed or payable by the business to the outsiders. Next is on the basis of time. We have 2 kind of liability: current liability and non-current liability. The only criteria to measure this is 1 year. Liability within 1 year is your current liability. Liability for more than a year is your non-current liability. Now, example of current liability: for within 1 year, you can have your creditors who are selling you on 1-2 month credit. Then you have your bills payable. Bills are paid, bills are drawn for 2 to 3 months, maximum 6 months, 9 months, है ना. So they are less than 1 year. Short term loans, you have taken loan from bank for a short term, for you can say 14 days, and overdraft, है ना. Non-current liabilities are which are more than a year, like long term loans you have taken from bank, issue of debentures. These are your non-current liabilities whose term is more than a year. जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपके पास उधार होता है, दैट इज़ योर नॉन करंट लाइबिलिटी. नाउ माई नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स. सो लाइबिलिटी इज क्लियर. इफ एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी पर्सनली ऑन माई नंबर. नाउ assets. Assets are the properties owned by business, enable the business to get economic benefit for the future. जो बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है जिससे उसने काम पे लगा के और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, दे आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस टू गेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज़ योर एसेट्स. हिंदी में कहें तो पूंजी, जिससे हम और आगे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ एसेट्स आर: फर्स्टली इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, तभी वो मेरा एसेट है अगर मैं उसका मालिक हूँ.
सेकेंडली इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल चीज़ क्या है? जो हमें दिखती है, विच कैन बी सीन टच्ड. इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन टच, विच कैन बी फेल्ड. सो एसेट्स कैन बी बोथ द थिंग, टेंजिबल, intangible. It should have some value attached to it. That's why it will be an asset. If it is free of cost, it's not an asset. It must have some value attached to it. And that value must be in terms of money. We can convert that value in terms of money. कि ये चीज़ इतने रुपए की है. So now type of assets. First is non-current assets. Means fixed assets. Again criteria is the same like liability. Fixed assets which will give us benefit for more than a year. That is our fixed assets. Now they are of two types, tangible fixed assets, intangible fixed assets. Tangible assets are those assets which can be seen, touched, like plant, machinery. They are your tangible assets. Furniture, you can see that. And intangible assets are those assets which cannot be seen, like goodwill. Goodwill is your asset. It give you income. आपका अच्छा नाम होगा, सेल ज़्यादा होगी, आपकी कमाई बढ़ेगी. इट इज़ गोइंग टू गिव यू इनकम, बट इट कैन नॉट बी सीन. आप गुडविल कहीं पे देख नहीं सकते. जैसे प्लांट आपको पता है ये मेरी फैक्ट्री है, गुडविल दिखती नहीं है, इट इज़ जस्ट फेल्ट. नेक्स्ट इज योर करंट एसेट्स विच आर विद इन अ ईयर, हुज वैल्यू विल डिमोलिश विद इन अ ईयर, लाइक स्टॉक, वो 1 साल में ख़त्म हो जाता है. कैश, दैट इज ऑल्सो, दे आर current assets which are within a year. And last one you have to understand, it's a new kind of asset, fictitious asset. These assets are those assets which are neither current nor non-current, neither tangible nor intangible. They are fictitious assets. जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, अब उसका खर्चा, अब क्योंकि उसका बेनिफिट 5 साल तक रहेगा, सपोज अगर आपने कोई ऐड निकाली है, उसका बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम तक रहेगा, तो क्या सारा खर्चा आप 1 साल में ही कर दोगे? तो आपके प्रॉफिट्स बहुत गिर जाएंगे. तो आप क्या करते हो, वो जो सारा खर्चा है वो ईयर्स में डिवाइड कर लेते हो, और उसको कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन. और वो एग्जाम्पल है हमारे एक फिक्स्ड एसेट का, फिक्टिशियस एसेट का, सॉरी. सो क्लियर? सो दीज वर आर एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड फिक्टिशियस एसेट्स. non-current assets, current assets and fictitious assets. non-current assets को हम लोग fixed assets भी कह देते हैं, tangible assets, intangible assets. So this was a topic for today. Learn this topic well, and then I'll put a test for the 6 terms I have already explained you. Thank you.